Hello students, myself Arpana Grover, Senior Faculty Member at Infomaths and CoursEdu. Nowadays students, the today main lecture is about Maharashtra CET 2023. As you know that the exam is approaching very nearby, so we have to understand how to perform in that exam and how to be very vigilant that so that we should not do any mistake in the exam. तो एग्जाम से बैठने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एग्जाम करना कैसे है. तो आज हम उसी के ऊपर एक लेक्चर छोटा सा लेंगे. सो आप 5-10 मिनट निकालेंगे अपने रूटीन में से ताकि आप इस वीडियो को सुन सकें और फिर एनालाइज कर सकें कि आपको महाराष्ट्र का एग्जाम देना कैसे है. राइट. सो आवर महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम, एज यू ऑल नो, दैट इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे एंड इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. देयर इज अ कंप्यूटर बेस्ड. आपको एक कंप्यूटर में ही पेपर देना होगा. 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा आपका. 90 मिनट्स आपको मिलेंगे and there will be 4 sections which will be there in your exam. First section will be maths and stats. Second section will be logical and abstract reasoning. Third is English and verbal ability and fourth is computer. That means पहला जो आपका मैथ्स का सेक्शन है इसमें आपको क्वांट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसमें मैथ्स जो है 9th, 10th, 11th और 12th सारा मर्ज होके आ सकता है. एंड स्टैट्स लॉजिकल मतलब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपको आएगी सेक्शन 2. सेक्शन 3 में आपको इंग्लिश एंड सेक्शन 4 में कंप्यूटर्स. पेपर मिनिमम पेपर आपका इंग्लिश रहेगा. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा बट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. सो आप डेफिनेटली तुक्का भी तब मारें अगर आपको श्योर है, बिकॉज आपको पता है कि दिस एग्जाम इज बेस्ड अपॉन द परसेंटाइल, इट इज नॉट अ परसेंटेज. सो अगर आप जितने तुक्के मारेंगे और अगर आप नेगेटिव में चले जाते हैं आपके मार्क्स, देन योर परसेंटाइल इट ऑफन डिक्रीजेस. सो ये जो एग्जाम है इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज. सो मेक इट वेरी श्योर कि आप कुछ जो तुक्के मारे अप्रॉक्सीमेटली वही मारे जो ठीक हो. एग्जाम मोड मैंने आपको बताया कि ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है एंड एस्पायरेंट्स आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड अ मार्क आंसर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ओनली. आपको कंप्यूटर्स दिए जाएंगे अपने सेंटर पे जहां पर कि आप कंप्यूटर के ऊपर पेपर करेंगे और इंग्लिश मीडियम में पेपर होगा. 90 मिनट का पेपर होगा. ये आपका सारे के सारे क्वेश्चंस ऑल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल बी हैविंग द 4 ऑप्शंस आउट ऑफ व्हिच 1 विल बी द करेक्ट आंसर. दिस इज द पैटर्न ऑफ द पेपर. 30 क्वेश्चंस फर्स्ट सेक्शन व्हिच इंक्लूड्स टोटल मार्क्स इज एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 60 मार्क्स का पेपर 1. Reasoning 30 questions, 60 marks. English 20 questions, 40 marks. Computers is 20 questions, which corresponds to 40 marks. So total in all, we are having a total set of 200 questions will be there in your examination, which will be coming in front of you. The main thing is how to attempt. What are the important instructions of this CET exam, which is the main focus of today's lecture. It is very important to look after the instructions कि पहले क्या देखिए. जब भी आप कंप्यूटर के आगे बैठेंगे सबसे पहले आपके पास एक स्क्रीन खुलेगी which will be showing your name as well as which will be displayed with the name and photograph. It will be displayed on the screen at a scheduled time. वहाँ पे and obviously you must take your Aadhaar card or your any of the photo identity proof to the center so that आप अंदर आप जा सकें. Right? And you are going to use your username and password which will be instructed in the admit card. जो आपका admit cards issue हुए हैं उसमें आपके ऊपर username and password होगा, वो आप डालेंगे. जैसे ही आप username password डालेंगे, click on sign in button. When you will sign in, so this will lead to, this is the first basic rule, basic instruction of login window. So this is a login window for your exam. So you must reach the center early also, ताकि आप जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे 15 से 20 मिनट पहले आपकी एंट्री हो जाएगी. एंड व्हेन यू विल लॉग इन इट विल शोज क्लिक आई एम रेडी टू बिगिन विद बटन. देयर विल बी अ बटन आई एम रेडी टू बिगिन विद. सो at that time when you will click this button I am ready to begin, your timer starts of 90 minutes start at that time. Right? So timer count starts when the candidate it's like clicks the button I am ready and your timer starts then. So student, जब हम लोगों ने I am ready to begin हमने pick कर लिया, then there will be, you can start your paper. When the opening window will be coming in front of you, on the extreme right hand side there will be a palette of questions.
which will demarcate all the sections of maths, reasoning, computers, and English. If say you don't want to attempt maths first, you want to attempt reasoning, like just click on the reasoning palette and the question will be in front of you. So उसके बाद आप इसको continue कर सकते हैं. So there are various buttons which you can see in the below section, like in every question. Green button means you have to submit the response. अगर आपने पेपर कर लिया, and there will be a save button also, right? So you have to set any answer out of the given 4 options by clicking on a circle button in front of the 4 options. So supposingly this is the question. In the front of the question there are 4 buttons, A, B, C and D. Say you find like B answer is correct, just click this, your answer is recorded. In case you want to change this answer, then firstly there will be an option of clear response. Clear response in the bottom. Click this button on the clear response. This will be cleared. Then finally, if you find like D is a correct answer, then final D is the answer. After putting up your mouse to the next page, just firstly save your answer. It is very important. अगला क्वेश्चन जाने से पहले you must save your answer. That means it is recorded. If you feel like, so this is the one case. If you feel like, yeah, I think D option हो सकता है, but I have to review it first also, then there will be other button that is review. Mark for review. Mark for review. If you find like कि जाने से पहले I have to review this. If you feel like yes, it is a correct answer, then it's fine. Just save and next. But if you find कि नहीं, it may change, you can have to change your answer, then mark for review. It will be given a yellow color. Mark for review and then next. Be in front of you. That is number of questions answered, number of questions unanswered. Mark for review. Check कीजिए. अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू में मार्क किया है आंसर, देन दैट विल बी इवैल्यूएटेड. बट अगर आपने कोई आंसर मार्क नहीं किया, दैट वुड बी इवैल्यूएटेड. अगर आपने वैसे ही मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है कि यू हैवंट मार्क्ड एनी, सो बिफोर एग्जिटिंग मेक इट वेरी श्योर जो आपने मार्क फॉर रिव्यू मार्क किए हैं आंसर्स, वो पक्का से पक्का आप उसको कंफर्म करके बाहर निकलें. सो कोई भी मार्क फॉर रिव्यू ना रहे. अगर वो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन में कोई भी आपका टिक रह गया, तो वही आंसर आपका रिकॉर्ड हो जाता है. Fine. So then you have to confirm by clicking on yes button, and finally your test is submitted. So these are some of the points you have to take care while giving the examination of this Maharashtra CET. So make it very sure कि हमारे पास जो buttons आएंगे, that is green button for recording our answer, which is the correct answer. It is our review button, mark for review. It is next and save. Before moving to any of the question, you must give a save option to every button. Otherwise, your answer will not be recorded, right? So make very sure you do your paper with a full confidence. No need of like any kind of puzzling yourself in the paper, because it will be a very easy type of a paper. Maharashtra is a very simple and easy type of a paper which you can attempt with a very good accuracy. हो सके तो कम से कम inaccurate मार्क कीजिए, because inaccuracy will decrease your percentile. So percentile को increase करने के लिए आपको accuracy level बहुत strong रखना पड़ेगा अपना. ये मत सोचिए कि negative marking नहीं है तो आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं. So your percentile it may decrease due to your making these unassumed guesses, right? So this was all about it, Maharashtra CET 2023, and all the best for your examination. Do well and be confident for yourself. Thank you guys.